everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will solving an important SQL question that has been asked in a EY. So that problem solve involving calculate the average monthly revenue for each sector using finance transaction data. So let's break down the problem statement over here. So okay, so we have two tables. The first one is a transaction table that contain records for various finance made by different companies. So that this table has a common transaction ID, which is a unique identifier for each transaction action. Company ID, which is again a identifier linking the transaction for a specific company transaction date. And the transaction acquired and revenue is nothing but revenue generated by company in that popular transaction. Now the second table is sector table. So that sector table map each company to its respective sector. So it has two column, company ID and sector. So company ID is the unique identifier for each company with corresponding to the company ID in a transaction table, and the sector is sector which is company belong. Now your goal is to write a SQL query that calculate the average monthly revenue for each sector in the year of 2020, and your output should show the average revenue for each sector for every monthly, allowing the now how each sector perform financially month by month. So your output should have column like month, sector, and the average revenue for that particular month and sector. So it's take a look at input table and output over the. So these two table are your input table, the transaction table and the sector table. This is your output which have column like month, sector, and average revenue for particular month and sector combination. So it's see how the output has come for these input tables. So if you see the transaction date, we can see that two months, that January month, January 2020, February 2020. So it's let's calculate the average revenue for the month January month for technology. So it's you to see company ID 1 here. So the company ID actually belong to the technology sector. So there are only two transactions made in the January month. So January month 20 with the company ID 1, company 2. So for the company ID 1 has a revenue of 5,000 in January, and since there is only one transaction for the sector in January, so the average revenue for technology sector is 5,000. As you can see in the output, so the month can belong month 1 denoted that month January. So sector and revenue average revenue is 5,000. Now if you see the company ID 2, so the company ID belong to the healthcare sector. So if you the healthcare sector here, the company 2 has a revenue of the 8,500 in a January. So the similarly with the just only one transaction for the healthcare, so that revenue average revenue has come up to be 8,500 here, since we are only referring to January month. Now if you see the February month, so these are the three transactions belong to the February month. If you see technology sector, so this is for the company ID 1 has a revenue of 4,500, and company ID has a revenue of 99,900, and both the company ID 1 and 3 belong to the technology sector. So the find the average revenue for technology sector, just sum up these two revenue, which is 4,500 now 99,900. So the total output around 400 approximate, just divided it to calculate the average revenue. So the average revenue will come out to be 7,450. So you can see for the every month technology sector and average revenue has come out to be 4,450. Now the only one company ID which is belong to healthcare sector. So the company 2 has a revenue of 7,500 in a February. So the average revenue for healthcare is 7,500. There is only one transaction. So I hope you understand the input and the output over here. So let's now move on to the step to solve this, and I'll pause the video here and just brainstorming like what step we can follow to solve this issue, and what kind of SQL query or function we can write it to solve this problem. Move on and let's step a little bit. Solution step: create a CAT to extract the month and filter by the year. So in every step, just create a common table
expression to extract the month from a transaction date and filter only the transaction that acquire in the year 2020. So in a city, we can calculate the average revenue for each company within the same month using the function compute the average monthly revenue for each company. So this is what we can doing in the next step. Join the city table. We can create in a step 1 with the sector table. So after creating the city, just filter group data, we can just sector table using this company ID. So what this join will help us to join will help us ensure that each company revenue data is matched with the correct sector. Now in step 3, just we can group the data by month and year. So after joining the table in a step 2, we need to group the data by month and sector. So this is necessary to calculate the average revenue at the sector level for each month. Since we want to be calculate the average revenue for the combination of sector, month, and this is the step we can just perform the group of function, and the last step we can just order the result. Since we need to order the result first by month and then sector, so this will be ensure the chronology order for each month. SE sector are listed over there. So now we can just going to be approach our solution. Let's now move on to the implementation part. So we can solving this issue and writing the SQL query by the MySQL workbench. So now my input table, transaction table and sector table, select query, we can write it here. Select star from transaction, then select star from sector table. Okay, let's first do it without CD, then later on just we can put it other condition also. Another approach using with see it. Now just want to join the table on a company ID column, because company ID something which is common in a both table. So हम लोग अब यहाँ पे दोनों tables का join लगाएंगे company ID के basis पे. तो we are writing select star, then उसके बाद from first table we can use is, ठीक है, transaction table. उसके बाद में यहाँ पे एज दिस इज द ट्रांजेक्शन टी वी कैन यूज इस. इनर जॉइन लगेगा यहाँ पे, हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे इनर जॉइन सेक्टर एज एस वी आर यूजिंग, एंड देन ऑन कंपनी आईडी टी डॉट कंपनी आईडी हो गया आपका यहाँ पे इक्वल टू देन एस डॉट कंपनी आईडी. ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपकी ये क्वेरी राइटेड हो गई और अब हम इसको रन करेंगे. अब आने पास में अब डेटा आ चुका है यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेबल से, कंपनी से, ठीक है, और ये ईच कंपनी रेवेन्यू डेटा मैच हो चुका है. कलेक्टेड सेक्टर, सो वट एवर कॉलम वी वांट रिट्रीव डेटा हेयर, जस्ट गोइंग टू बी राइट द क्वेरी कंपनी आईडी. अब यहाँ पे हमें कंपनी आईडी लिख लेंगे जो कि हमें कंपनी आईडी चाहिए. देन उसके बाद में और क्या चाहिए, हमें मंथ चाहिए. तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ओनली मंथ करेंगे. तो एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम द डेट, यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन डेट के साथ में. तो यहाँ पे हम लोग मंथ फ्रॉम डेट एज मंथली, या फिर मंथ यूज़ कर सकते हो एज एन मंथ. नाउ वी कैन रन इट दिस, ठीक है, एज. उसके बाद में हमें कुछ और नहीं चाहिए, तो अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे. उसके बाद में सिंस केस ऑफ गोल वॉज कैलकुलेट द एवरेज मंथली सैलरी और रेवेन्यू फॉर ईच सेक्टर इन ईयर 2020 फॉर एवरी मंथ. सो हेयर आई एम गोइंग टू बी अप्लाई average function to compute data or average revenue. So here in this case we can write it one function average, ठीक है, और उसके बाद में average of revenue. तो हमने यहाँ पे average का फंक्शन यूज़ किया है, टी डॉट रेवेन्यू, यानी कि ट्रांजेक्शन टेबल का रेवेन्यू ले लिया. ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसको एज एन एक नेम दे रहे हैं एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने यूज़ किया. अब इस क्वेरी को हम लोग रन करके देखेंगे. अप्लाई द ग्रुप बाय कॉजिंग बिफोर अप्लाइंग द कॉज. अब हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे किसके बेसिस पे, आपका ईयरली बेसिस पे. ठीक है, डिफिकल्ट टू इनपुट, द ईयर इज ऑलरेडी 2020 बट कंप्यूट द करेक्टेड रिजल्ट, वी हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है, एज और 2020 हमने यहाँ पे ईयरली. इसके बाद में यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रुप बाय, देन हम ग्रुप बाय किसके थ्रू लगा रहे हैं, हम एवरेज रेवेन्यू के थ्रू. तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मंथली है, तो हम यहाँ पे मंथली का भी लगा सकते हैं.
तो यहाँ हम लोगों ने ग्रुप बाय अप्लाई किया, अप्लाई बाय कॉज। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेक्टर, ठीक है, और मंथली, ठीक है। तो मंथ तो हो गया हमारा ऊपर वाला जो ट्रांजेक्शन डेट से निकाला है, और सेक्टर आपका हो गया जो कि आप यूज़ कर रहे हो। तो हम यहाँ पे सेक्टर से हम लोग कोई डेटा लेके आ रहे हैं, सेक्टर डॉट सेक्टर नेम वी कैन यूज़ इट, तो सेक्टर डॉट एस डॉट सेक्टर ये हो गया। यहाँ पे हमारा अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये सेक्टर आ चुका है। अप्लाई बाय, सिंस वी डोंट हैव वांट बी कंपनी आईडी, ठीक है, नाउ वी वांट टू बी वांटेड, तो हम रिमूव कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। तो अब हमारा ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे एरर आएगी फिलहाल के लिए, हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे एक कॉमा लग गया, ठीक है। अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। दिस इज कम नाउ। टेक्नोलॉजी टेबल का मंथ 1 के अंदर हमारा रेवेन्यू निकल के आ चुका है, हेल्थ केयर का निकल के आ गया, टेक्नोलॉजी का निकल के आ गया, हेल्थ केयर का निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा अलग अलग मंथ के बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर और मंथ, ठीक है। नाउ इन ए केस what we can first of all just want to be join both the tables so that step can be join the transaction table, ठीक है। हमने दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया, ठीक है, किस बेसिस पे, कंपनी आईडी के बेसिस पे। देन उसके बाद में दोनों कॉमन फील्ड्स को यूज़ किया, जो जो फील्ड हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमने यहाँ पे सेक्टर को यूज़ किया, ठीक है, और ज्वाइन के लिए हमने कंपनी आईडी को यूज़ कर लिया, ठीक है। कंप्यूट द रेवेन्यू, अब हमने रेवेन्यू के लिए एवरेज फंक्शन को यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन था वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म हो गया, और उसके लिए फिर हमने एक्सट्रैक्ट फंक्शन को यूज़ किया मंथ के लिए और ईयर के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे वेयर कंडीशन में ईयर लिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ईयर के लिए एक्सट्रैक्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा मंथ, ये हो गया हमारा ईयरली बेसिस पे, ठीक है। लास्टली हेयर वी जस्ट ग्रुप एंड एग्रीगेट द डेटा। सो आफ्टर द ज्वाइनिंग द टेबल, ठीक है, फिल्टरिंग द डेटा, वी जस्ट अप्लाइड द ग्रुप बाय, ठीक है। तो हमने उसके बाद में सेक्टर और मंथ के बेसिस पे ग्रुप बाय लगा दिया, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या ग्रुप बाय कर दिया मंथ के बेसिस पे, और रेवेन्यू कैलकुलेटिंग फॉर ईच इंडिविजुअल मंथ बाय ग्रुपिंग द सेक्टर और फोकसिंग ऑन द रेवेन्यू एट द सेक्टर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट सिंस वी वांट टू बी कंप्यूट द रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मंथ एंड सेक्टर, so that's why we applied the group by for the cause on a monthly sector. So once you apply the average function, compute the average revenue for each sector within the month, ठीक है, actually gives us the desired result for monthly revenue, average revenue per sector. एंड लास्ट इफ यू वांट टू बी डू, इस वीडियो में यहाँ बात की थी कि हम लोग किस तरीके से जो EY के अंदर क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि हम एवरेज रेवेन्यू को जनरेट करना है सेक्टर वाइज, ठीक है। तो वो हमने इसका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया, और हमने पूरा की पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को निकाला है MySQL के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।